Hi guys, welcome to Oliveboard. Please confirm if I am audible and visible. I'm really sorry for the little delay. There was some issue with the electricity, so that's why the session got a bit delayed. But I hope you all are doing well. Shall we begin? Can we start now? I hope I am audible. Well, shall we begin? So let's do certain MCQs. But before starting with your government schemes, I just want to tell you one thing. Many of you have raised this concern कि मैम पढ़ना क्या है आपके इंश्योरेंस सेक्टर के बेसिक्स में. तो देखो, जब हम इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ते हैं या हम जैसे मान लें हम बैंकिंग सेक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो हम बैंकिंग सेक्टर में क्या पढ़ते हैं बेसिक्स में? हम पढ़ते हैं बेसल लॉ के बारे में, हम पढ़ते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का या फिर रिस्क वेटेड एसेट्स के बारे में. बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस I hope guys I am audible. I don't know why am I not able to see any one of them. Okay. So what happens is insurance में basics में क्या पढ़ना है? तो जैसे this is the first question for you. How is insurance density calculated? Quickly tell me insurance density कैसे calculate करते हैं? What is the formula? Can you tell me the formula of insurance density? Anyone? Hey, so many sitting in the class. None of you are answering. That's not a good thing. So when I talk about insurance density, it's nothing but the रेशियो ऑफ टोटल प्रीमियम टू टोटल पॉपुलेशन. तो देखो, जब हम इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करते हैं, ये भी तो एक इंश्योरेंस का बेसिक टर्मिनोलॉजी है. तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी नीचे पॉपुलेशन लिखो, टोटल पॉपुलेशन विच इज देयर पर कैपिटा जैसे हम बोलते हैं, और ऊपर लिखो टोटल प्रीमियम. As per the recent stats, it stands somewhere around $70, but that's what the statistics says. This is your insurance density. At the same time, अगर मैं बोलूं insurance premium क्या होता है? Can somebody tell me that? What is insurance premium? Insurance premium is total. Good evening. Good evening. It is total premium which is collected divided by your GDP. तो GDP किस तरह से बढ़ रहा है और आपका टोटल प्रीमियम क्या है? That is your insurance penetration. That is your insurance penetration. तो ये आपका इंश्योरेंस का बेसिक है. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इंश्योरेंस के बेसिस पे. जैसे इंश्योरेंस के बेसिक्स में आपकी कुछ रेगुलेशंस भी आ जाएंगी जो which were there in news quite frequently, या फिर अभी फिलहाल में they were being discussed in some parliament and all. जैसे as per the Insurance Laws Amendment Act of 2015, what is the new capital requirement for foreign companies who are engaged in the reinsurance business? तो देखो, क्रॉस बॉर्डर रीइंश्योरर्स होते हैं. क्रॉस बॉर्डर मतलब इंडिया की कंपनी होगी पर वो रीइंश्योरेंस कहाँ से करा रही होगी? किसी फॉरेन कंपनी से. सो इन दिस केस दे हैव दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड व्हाट इट इज? Do you have any idea about this requirement of this capital insurance? So it is 1,000 crore. तो this is also a part of it. अब ये कहाँ से आया है? तो अगर आपने IRDAI की रिपोर्ट अगर पढ़ी हो, या फिर on their website also there are a couple of regulations that are there. उसमें से सारी regulation नहीं पढ़नी है, but only the important ones which talks about how this FDI is coming to India. और जैसे डी टैरिफिंग, इट्स डायरेक्टली रिटन इन योर सिलेबस. तो डी टैरिफिंग से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट है तो प्लीज गो एंड स्टडी दैट. तो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नाउ अनदर बेसिक क्वेश्चन. सो दिस इज रिगार्डिंग एन अमेंडमेंट दैट वाज बॉट इन 2019. तो 2019 में अमेंडमेंट के बाद इट सेड दैट एफडीआई जो है, एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस एफडीआई लिमिट? So this is again a basic question. This is what I was referring to when I told you कि इंश्योरेंस का बेसिक पढ़ के जाना. तो ये फेज 1 के लिए नहीं, ये फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फेज 2 में भी इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो क्विकली टेल मी इंश्योरेंस का में इंटरमीडियरीज कौन है? एट द सेम टाइम इंश्योरेंस सेक्टर के इंटरमीडियरीज के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए व्हाट इज द एफडीआई लिमिट? ये न्यूज में था कंपनीज के लिए. टेल मी. आई होप यू सबने पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा. एवरीबडी ऑफ यू माइट हैव रेड इट. सो रिमेंबर वन थिंग, इंश्योरेंस कंपनीज की जब मैं बात करती हूँ, सो इट इज 74%. अभी अगस्त में ही द प्रपोजल वाज बीइंग पुट फॉरवर्ड जिसमें द 74% दे वांटेड टू इंक्रीज टू 100% एफडीआई. बट फिलहाल कितनी है? इट्स 74%. व्हेन आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, यहाँ कितना है? कैन समबडी टेल?
देखो इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो मेन कंपनी है, और फिर इंटरमीडियरीज होती है जो इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो इंटरमीडियरीज हैं इसमें हम कितना पैसा लगा सकते हैं? How much FDI can come? Foreign direct investment, how much it can come? It can come up to 100%. So this is also a basic question. Next, as of the latest amendment, basically ये तो हमने पढ़ा भी था IRDI की reports में. In your IRDI report, what is the enhanced limit of compensation that can be awarded by insurance ombudsman? What is that? ये हमने पढ़ा था. I know this, that we have discussed about this in our insurance that report. So now quickly tell me what is the answer to this. No idea? At least try. Yes, very good. It was earlier 30 lakhs. पहले 30 लाख थी, अभी जो recent amendment है उसके बाद इसको 50 लाख कर दिया है. तो देखो यहाँ पे भी there have been a change. Now this amendment it's very important क्योंकि after all ombudsman all together is very important, तो हमारे लिए ये भी important हो जाएगा. और इंश्योरेंस ombudsman में जब हम क्लेम लेके जाते हैं तो वो किस टाइम पीरियड तक का हो सकता है? ओनली अप टू 1 ईयर. तो ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कोई 10-15 साल पुराना क्लेम लेके चले गए, ऐसा भी नहीं होगा. But definitely, what is the compensation limit that is there? It is 50 lakh now. Earlier, it was 30 lakhs. Next, sovereign green bonds को certainly IRDI के एक circular ने under what theme they have classified is. So sovereign green bonds, they are classified as agriculture, investment in agriculture, investment in real estate, investment in infrastructure, investment in foreign securities और investment in equity. Tell me इसमें से कौन से sector के अंदर they have classified it. It's also very basic. Okay, so recently they have classified the sovereign green bonds under investment in infrastructure. So remember this. Okay, just one more thing if I want to ask you is, when I talk about IRDI कौन से committee की report की recommendation से बनी थी? What was the committee that recommended this IRDI being formed? This altogether this organization, ये organization कब बनी? After the recommendation of which committee? Anybody, if you have an idea? मल्होत्रा कमीशन. वेरी गुड. तो मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर थे मल्होत्रा. सो आफ्टर हिज रिकमेंडेशन यू हैव दिस IRDI being formed in 1999. IRDI Act was passed and thereon we have this Insurance Regulatory Development Authority. अच्छा, अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में सबसे पहला जो कंपनी थी, व्हाट वाज इट? इफ एट ऑल यू कैन टेल मी. आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज योर LIC, जिसकी मोनोपोली थी इन दिस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. और अगर हम बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, तो उसमें GIC की मोनोपोली थी. और GIC के अंदर आपके वो बिग 4 इंश्योरेंस कंपनीज थी, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारे थे. बट देन यू हैव दिस, उसके बाद इन 2002 बेसिकली ये जितनी भी सब्सिडरीज थी दे वर मेड इंडिपेंडेंट बॉडी एंड GIC टुक ओवर द रोल ऑफ रीफाइनेंसिंग. But anyways, next question. What is the name of the meeting that is organized by IRDI with CEOs of insurance companies to promote ongoing communication? तो जैसे सारे स्टेक होल्डर से बात करने के लिए they do have this meetings. So you have to tell me what is the name of this meeting. यस विकी, यू आर करेक्ट. अगर हम आज की बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है, तो इट्स योर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. दैट्स करेक्ट. यस, इट्स बीमा मंथन. और हर महीने की कौन सी डेट को वी हैव दिस बीमा मंथन बीइंग देयर? ऑन एवरी मंथ 10th, ऑन एवरी मंथ 11, 12, 13, 14 और 15. एवरी मंथ वी हैव दिस बीमा मंथन. It's on which date of every month? Is it 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15 or somewhere else? It's on every month's 15th date.
15th day of every month that you have this बीमा month है. Next, what does the solvency margin in insurance sector represent? अब देखो इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है. जैसे आपका सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है, जैसे हमने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी देखा, ऐसे ही सॉल्वेंसी मार्जिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टेल मी व्हाट इज सॉल्वेंसी मार्जिन. जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ना, जितना भी कैपिटल आ रहा है उसके अक्रॉस देयर इज सम लिक्विडिटी दैट हैज टू बी मेंटेन, इट्स एट एज पर योर बेसल 3 नॉर्म्स. ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में यू हैव दिस सॉल्वेंसी मार्जिन. तो सॉल्वेंसी मार्जिन इट सेज दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस एसेट दैट यू हैव टू कीप ओवर योर लायबिलिटी. So what is the excess insurance company's assets over the liability? That is what you call it as insurance sector. Vicky, NABARD के mains के लिए if you are asking me the important schemes, तो जो मैंने 4-5 sessions cover किए थे, you please go and see that. और उसमें से वो वाले schemes को skip कर देना, which is of Ministry of Science and Tech और Ministry of Earth Sciences and all. तो इनको skip करके बाकी सारी schemes वही हैं, important है, इसीलिए मैं वो repeat नहीं कर रही. But yes, solvency margin, it's the excess of insurance companies asset जो उनको asset extra में रखना है over their liability. So that's your solvency margin. अब अगर इनको क्वेश्चन बहुत मुश्किल बनाना होगा तो साफ पूछ सकते हैं कि जीवन ज्योति बीमा योजना में व्हाट इज द इंश्योर्ड अमाउंट, या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च कब हुई थी. बट नाउ दे वांट टू मेक इट द क्वेश्चन अ लिटिल ट्रिकी. सो इन 2022 बेसिकली दे रिवाइज द सॉल्वेंसी फैक्टर फॉर दिस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. एंड व्हाट वाज दैट रिवाइज्ड फैक्टर? That's what the question is. Tell me. Any idea? Okay. So earlier the solvency factor which needs to be kept for this Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana was 0.10%, but later it was brought down to 0.05%. तो अभी कितना चल रहा है? It's 0.05. इसको याद रखना, this is important. अगर क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा तो डेफिनेटली वो सॉल्वेंसी रेशियो से पूछ सकते हैं, because after all वो इंश्योरेंस का like it's an exam of insurance. But one more thing I just want to highlight over here is इसके अलावा आपकी सॉल्वेंसी रेशियो लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी रहती है, नॉन लाइफ के लिए भी रहती है. दैट यू हैव टू चेक एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना. बिफोर फेज 1 आई टुक अ कपल ऑफ क्लासेस ऑन दिस गवर्नमेंट स्कीम्स विकी, उन्हीं को देख लो. फेज 1 से पहले मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए थे दे वर लाइक फॉर द लेवल ऑफ दिस फेज 2 ओनली. तो आप एक बार उन्हीं को रिवाइज कर सकते हो. Definitely. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, it is basically nothing but it offers a minimum assured pension for your senior citizens. तो ये senior citizens के लिए pension product था. When I talk about this Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, what is the objective? So the objective is to protect elderly persons against a future fall in their interest income due to uncertain market conditions and to provide social security during the old age. कब लॉन्च हुई थी? इन 2017 and it was there till 2023. What is the age criteria? Age criteria is 60 years and above. What is the tenure? The policy tenure is of 10 years. Who is the implementing agency? LIC. तो अब जिस भी policy का अगर implementing agency आपका LIC है, so that policy altogether becomes important, right? What is the mode of pension payment? Either you can pay monthly, you can pay quarterly, you can pay half yearly or yearly. Anything if you want to ask up till now? If you have any doubt, please raise. Okay, let's have a look then. When I talk about, okay, just a minute. Yeah. So when I talk about this premature withdrawal, is it allowed? Yes, definitely it's allowed. So it's possible in the case the money is required for the treatment of terminal or critical illness. On such premature exit, 98% of the purchase price shall be refunded. What about the loan facility? Loan facility is available after completion of 3 policy years. The maximum loan that can be granted shall be 75% of the purchase price. तो अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली होगी
तो 75% उसका दे कैन टेक द लोन. What about the GST? It's GST exempted, मतलब टैक्स तो नहीं ले रहे हैं. What about the majority benefit? If the pensioner survives till the end term of the policy, that is 10 years, तो जो भी purchase price of the annuity along with the final pension installment will be payable to the policy holder. In case of the in case the pensioner die before or during this 10-year period, the purchase price of the annuity scheme will be refunded to the beneficiary. तो जो भी nominee होगा उसको वो refund कर देंगे. Now what all you have to remember? First thing is minimum entry age कब है? 60 years, and that to completed 60 years. Maximum entry age there is no limit. Policy का term 10 साल का है. Investment limit कितनी है? 15 lakh per senior citizen. Minimum pension it can be 1000, 3000, 6000 or 12000. That depends कि आप कब join कर रहे हो. अगर आप मंथली कर रहे हो तो 1000 देना, क्वार्टरली कर रहे हो तो 3000. आई होप यू कैन जस्ट फिगर आउट व्हाट दे आर सेइंग. मैक्सिमम पेंशन कितनी है? मंथली लोगे तो 9250, क्वार्टरली लोगे देन 27750, एंड दैट्स हाउ द पेंशन इज डिफाइंड. अच्छा, नाउ यू कैन आल्सो आस्क मी व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो दैट डिपेंड्स. अभी रिसेंटली जब देखा था तो 7.4% था. जब ये स्कीम 2018 में इट वाज देयर, तो उस टाइम पे इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% भी था. तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इट कैन चेंज. बट देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट पेंशन एंड ऑल. तो इंश्योरेंस में दिस पेंशन रिलेटेड स्कीम्स दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस. I'll wait for your answers. If at all you have any question as well, so you can raise the questions as well. Choose the correct statement about UPS, Unified Pension Scheme. It was recommended by TV Somnath Committee 2023. It will be effective from 1st of April 2025. Next is 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years will be given. Index inflation is based upon all India Consumer Price Index combined. Tell me which of the following statement is correct. It is going to replace your NPS. So, is it going to replace your NPS? Is that so? Very good. Option number E is the correct answer. E मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. कमिटी कौन सी कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी? इट इज योर टीवी सोमनाथन कमिटी. इंपॉर्टेंट है. और यूपीएस में बेसिक का कितना परसेंट मिलता है? बेसिक का 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट 12 महीने का एवरेज करेंगे. और अगर किसी को 25 ईयर सर्विस के कंप्लीट हो गए हैं तो दे विल बी प्रोवाइडेड विद द पेंशन देयर ऑन. इन्फ्लेशन की जब तक बात करते हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन इट विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर. इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस एनपीएस. एनपीएस भी रहेगा और यूपीएस भी रहेगा. पर हाँ, जिन लोगों को एनपीएस से यूपीएस में ट्रांजिशन लेना है दैट विल बी मेड अलाउड. तो जो भी ट्रांजिशन लेना चाहे दे आर अलाउड टू डू दैट. कैन यू प्लीज टेल मी एनपीएस वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? एनपीएस कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? एनपीएस वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? एनी आइडिया? Very good. So NPS was launched in the year 2004. And when was it made open for the corporate sector? तो जब 2004 में was it there for corporate sector या बाद में आया था? Corporate sector इसमें बाद में आया था. In which year was it opened for corporate sector? That is my question from all of you. Later in 2009. Very good. Now let's talk about UPS. यूनिफाइड पेंशन स्कीम से आने वाले आरबीआई, नाबार्ड, IFSCA, इनफैक्ट IRDAI या जितने भी इस तरह के रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, यू प्लीज प्रिपेयर डिस्क्रिप्टिव आंसर. वरना ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. UPS, when I say it is introduced by the government in this year only 2024,
Some features is like 50% of the last drawn salary. Last drawn salary मतलब मैं बेसिक पे की बात कर रही हूँ. बेसिक पे और टोटल पे अलग होता है. तो नेट पे का 50% नहीं, सिर्फ बेसिक पे का 50% वुड बी गिवन. डियरेंस रिलीफ पेंशन के टाइम पे इट विल बी इन्फ्लेशन एडजस्टेड CPI IW. फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी? 60% तक. सुपर एनुएशन पे आउट, साथ में ग्रेचुइटी भी मिलेगी. मिनिमम पेंशन दे आर सेइंग कि अगर किसी ने 10 साल भी कंप्लीट कर लिए हैं, उसका बेसिक पे कुछ भी हो 10,000 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा. दैट्स फिक्स्ड. तो यूपीएस में कहीं ना कहीं वो एनपीएस का जो मार्केट लिंक्ड फीचर था, दे हैव चेंज्ड इट टू एश्योर्ड पेंशन. तो एटलीस्ट एक पोर्शन जो आपकी पेंशन का है वो तो आपका एश्योर्ड रहेगा ही रहेगा. इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, CPI IW they are going to use. Can you please tell me what is the base year of CPI IW? Anyone? What is the base year of CPI IW? Two 2011, 2016, 2000 something else. 11-12 नहीं है. It's not 11-12. It's something else. You just tell me what is the base year. Not only this, 4 तरह के CPI होते हैं. You please go and see who publishes your CPI combined, who publishes your CPI IW, AL and your rural laborer and all. इसके अलावा डू सी व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ ऑल ऑफ दीज. तो जैसे CPI का बेस ईयर क्या है, कंबाइंड का, ये सारा स्टैटिक का पोर्शन है. यू हैव टू रीड इट बिफोर योर एग्जामिनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. इट्स 2016. But anyways, we'll move ahead and see the next part. If I talk about the contribution, तो ये चीज इसके अंदर सिमिलर है. जैसे अगर मैं OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, और UPS की बात करूं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, OPS में एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन था तो नहीं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाज नॉट देयर. तो 100% आपका सरकार पे ही बर्डन था. एंड दैट्स व्हाई यू नो दिस अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट सेड कि इतना ज्यादा बजट में बजटरी एलोकेशन इज गोइंग टूवर्ड्स दिस पेंशन कि गवर्नमेंट के पास बहुत ही छोटा स्पेस बच जाता है फॉर अदर वेलफेयर स्कीम्स. तो इसलिए गवर्नमेंट वाज ऑफ द व्यू कि देखो, एक तो कंट्रीब्यूशन कर दो और दूसरा इसको मार्केट लिंक्ड कर दो. तो कंट्रीब्यूशन इज देयर इन एनपीएस एंड ऑल्सो इन यूपीएस. तो इस तरह से यूपीएस इज समवट बिटवीन एनपीएस एंड ओपीएस. तो ये दोनों के ही कुछ कुछ पार्ट्स लेके आता है. यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% रहेगा. दिस 18.5% इज नॉट फिक्स्ड. गवर्नमेंट विल सी फ्रॉम टाइम टू टाइम, असेसमेंट्स विल बी डन. तो जो भी परफेक्ट होगा दैट विल बी टेकन. Now when this transition will be taking place, government is saying हमें इस transition में 850 करोड़ का extra खर्च आएगा. So that's what government says. This switch option will be available after all those who have joined after this 2004, जो NPS के लिए eligible थे, they can now switch over to UPS. Definitely next year ही हो पाएगा. 1st of April 2025 से this UPS will be there. The benefit, government is assuming कि 99% लोग NPS से UPS में shift होंगे ही होंगे. If I talk about the difference between OPS, NPS and UPS, OPS, it's a defined benefit scheme. जिसमें 50% of the last drawn salary was given and it was also adjusted to inflation. Same way, UPS में भी 50% of the last drawn salary will be given. एक फर्क जो है, OPS में लास्ट मंथ का चेक कर रहे थे, बस लास्ट मंथ में कितना बेसिक पे लिया. UPS में लास्ट 12 मंथ का एवरेज चेक करेंगे. 12 मंथ्स रिटायरमेंट से पहले उसका एवरेज निकाल के फिर देंगे. बस ये फर्क है. एनपीएस में इट वाज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम जिसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे. तो गवर्नमेंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, बट द पेंशन अमाउंट ओवर हियर वाज नॉट फिक्स्ड. एंड यही सारा प्रॉब्लम था, क्योंकि मान लो आपको हर महीने पता ही नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी. अब अगर आपकी पेंशन फिक्स नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कितना खर्चा करो. एक महीने हो सकता है आपका 10,000 खर्चा हो, दूसरे महीने हो सकता है 2,000 हो. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. इसके अलावा ओपीएस, इट वाज कंप्लीटली एंटायरली फंडेड बाय द गवर्नमेंट.
एनपीएस इट्स अ मार्केट लिंक थिंग, क्योंकि कुछ मार्केट के प्रोडक्ट है, जैसे इसके अंदर एचडीएफसी का एक लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर एन्युटी प्लान है जिसको हम बोलते हैं, एसबीआई का एक एन्युटी प्लान है, एलआईसी का भी शायद एक एन्युटी प्लान है, तो वो एन्युटी प्लान हम अपने हिसाब से परचेज कर सकते थे। इन यूपीएस, यूपीएस ऑफर अ मिनिमम गारंटी पेंशन, एक अमाउंट तो मिनिमम गारंटीड है, बट डेफिनेटली बाकी सारा आप एन्युटी में लगा सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। नेक्स्ट इज ओपीएस में पूरा का पूरा बर्डन, पूरा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे था, एंड दैट्स व्हाई अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट टुक बैक दिस ओपीएस स्कीम। एनपीएस की बात करें, सो इट्स पोर्टेबल, इट्स फ्लेक्सिबल, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट थॉट कि ये बहुत बेटर रहेगा, मार्केट के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, बट देन अभी भी हम देख रहे हैं पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो मे बी जेन्युइन कंसर्न रही ही होगी। यूपीएस इट्स कंसिडर टू बी मोर सस्टेनेबल बिकॉज एटलीस्ट एक लमसम अमाउंट आपका वो फिक्स रहेगा, so that's a good thing about UPS. This is the next question. Tell me what could be the answer to this. एनपीएस में तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 14% है, बट इन यूपीएस दे से 10% रहेगा, बट दिस इज यू नो जस्ट दी what I can say, इसके respective various departments, various ministries will be coming up with their own version of it, so we have to wait for that. But हाँ, अगर like broadly we say तो यूपीएस में 10% है, और एनपीएस में yes maybe 14% was there, but I feel ये like was it implemented or not, ये इसके लिए I am doubtful, क्योंकि मुझे नहीं लगता एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 14% देना चाहेगा, बट देन लेट्स आई हैव टू चेक इट फर्स्ट। यस, वेरी करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज रीस्ट्रक्चर्ड इन 2016 to establish Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, Day NRLM? It was your Swan Jyoti Gram Swarozgar Yojana. As of 30th June 2024, the mission has achieved implementation in 7,135 blocks in 742 districts across 28 states and 6 UTs, mobilizing 10.05 crore women into more than 90.86 lakh of self-help groups. DNRLM, it's implemented across the country except in Delhi and in Chandigarh. So Delhi or Chandigarh mein you won't find this scheme. Otherwise, it's in every other district or the state. Next is, which of the following initiative was launched very recently under DNRLM to promote rural entrepreneurship and creativity? With this, guys, I also want to tell you, union budget में जितनी भी schemes थी, be it related to your skill, be it related to your employment, or anyways, these all schemes are very important. You please go and watch them out first. Tell me what could be the answer to this. So it's Million Designers, Billion Dreams. It is superheaded or spearheaded by your LEAP in collaboration with Day NRLM. What is LEAP? LEAP is a catalyst organization that emerged from the multidisciplinary work in India by Design Laboratory at Harvard and Transform Rural India Foundation with seed investment provided by Bill and Melinda Gates Foundation. Next, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना। तो जितनी भी स्कीम्स है, चाहे वो आपकी जनजातीय विकास हो गई या फिर प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान है, ऑल दी स्कीम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी करके जाना। इफ एनी स्कीम इज रिलेटेड टू योर ट्राइबल पीपल तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपके जो सिलेबस है उसमें सोशल सेक्टर दे हैव लाइक पेड अटेंशन टू सोशल सेक्टर एज वेल, तो ट्राइबल अफेयर्स से पीएम जनमन एंड ऑल दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ टेल मी द आंसर टू दिस। वैसे ये सारी स्कीम्स आपके नाबार्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड भी सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड काफी सारी स्कीम्स पूछता है क्वेश्चंस में। सो येस, ऑप्शन नंबर 3 इज द वन दैट इज करेक्ट। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹15 lakh इज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन धन विकास केंद्रास. It's a centrally sponsored scheme with a total financial outlay of rupees 1612. This is incorrect. And Ministry of Minority Affairs is also not there. It is Ministry of Tribal Affairs. First thing, it will be there till 25-26, and the implementing agency is TriFed.
Total outlay 1612.27 crore, but it's a central sector scheme. So it's not a centrally sponsored one. It's a central sector scheme. Coverage all states and UTs. Objective is to strengthen the tribal entrepreneurship initiatives. A financial support में what they are doing is for procurement of minor forest producers at minimum support price, for creation of infrastructure facilities and value addition training programs through One Dhan Vikas Kendra. So that's what they are doing. And VDVKs are primary clusters of tribal self-help groups who are benefited through value addition and marketing of minor forest produce or the non-MFPs. A maximum amount of 15 lakh is provided to state governments for establishing VDVK centers. This VDSHG is a self-help group. Up to 20 members will be there, क्योंकि 20 members से ऊपर जैसे ही हो जाते हैं ना तो वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप देखोगे 20 मेंबर से हमेशा कम ही रहेंगे. जैसे ही ऊपर होते हैं तो जॉइंट लायबिलिटी पार्टनरशिप में दे कन्वर्ट देमसेल्व्स. यहाँ पे द कंट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ STs and are engaged in minor forest produce. If I talk about these VDVK, they will consist around 15 such self-help groups and have a membership of up to 300 members. Anything if you want to ask up till here? यहाँ तक अगर कुछ पूछना है then please ask. Otherwise, I'll wind up the session here itself. We'll meet again tomorrow and we are going to discuss more schemes. And one more thing, guys. जैसे आज मैंने क्लास की शुरुआत में भी discussed about certain basics of insurance sector. If you feel कि आपको इन insurance sector के basics से related, if you want some help, then you can write it down in the comment section below. We can bring in more sessions on this basics and all. Anything if you want to ask, please ask. Otherwise, in the comment section, do tell me how was the session for you. If you want more such session, you can also tell me that. और इसके अलावा अगर insurance के basics you want me to cover, I can cover that as well. But that's all from my side. Anything else? Okay then. If you feel that the session was helpful for you, do hit the like button.